All right. So yeah, I hope the screen is visible to you. So basically, today's our subject is control systems, and in the last class, we have seen Mason's gain formula, right? So what we will do, we will solve one more example of Mason's gain formula so that you understand the concepts that you feel are little difficult or complicated. Okay, so let me just draw the example here. We are solving for Mason's gain formula. Okay, so let me just give you the example. You can start drawing with me. Let us suppose this is our input node. We have three more nodes, 1, 2, and 3, and this is our output node. Okay, so let me just connect these nodes. Here we have one loop, self loop. Then we have another loop like this here. Then we have another loop here. Third loop is here, and the fourth one is here. Okay, so this is input R, this is input C, and the path gains will be A, this is B, this is C, D, E, F, G, H, and this is I. Okay, so this is our signal flow graph SFG, and we have to apply Mason's gain formula to find out the transfer function. Okay, so I will write the formula here also. What is the formula? Formula for Mason's Mason's gain formula is T is equals to summation of from K is equals to 1 to K Pk into del K divided by del. Okay, so now what is Pk? Pk is forward paths. Del K is the determinant of loops which are not touching the kth path, and del in the denominator is the overall our, what we can say, determinant, right? So how do we calculate this? What is the first thing that we have to do here? We have to find out forward paths. All right, guys, we have to find out forward paths. So how many forward paths are there and which are those? Can you write in the chat box? Please write the forward paths. How many are there? From input to output, how many forward paths are there? Anyone? ABFI. Is it the forward path? ABFI. I guess Shardul, you want to say ADFI, right? B will not be there. So I see forward path means what? Okay. First of all, let me just know that I'm clearly audible and my presentation is also visible. If it is not the case, then we can stop the class. Okay. अगर मेरा presentation दिख रहा है, audio आ रहा है, so please give the responses. All right, it is audible clearly, visible. Okay, AEFI is the another path. Yeah, all right. AHI. Okay. So apart from these three, are there any other forward paths? I guess no. So there are only three forward paths. So what does mean by forward path? Forward path is nothing but the path from input R to output C. Okay. So if you see A, D, F, I, it this is one forward path. So P1 will be
A, D, F, I. This is forward path. P2 will be path 2, that is A, E, F, and I. A, E, F, I is the right. So this is, and the last one, that is P3 is equals to A, H, I. This is A, H, and I. So forward path means the path which connects input and output. All right. Now, what is the next step? What do we do now? We find loops, number of loops. So how many loops are there and which are those? First of all, how many loops are there? Just observe the figure clearly and let me know how many loops are there. I'm not talking about individual loops or anything like that. I'm just asking about loops. How many loops are there? Can you observe? Okay, Akhil says that there are three loops. Let us see. All right, see. Okay, Shubham says there are four loops. We'll see. We'll see. Okay, no problem. That is no problem. Okay. So what will be the L1? L1 is the loop 1. Loop 1 is this B. Okay. This is the self loop. It can be considered as a loop. So B is the one loop. All right. Now L2, loop 2 will be, see this, DC will be the second loop, DC. Right. DC will be the second loop. After that, L3 will be DC. After that, EC will be another loop, right? This is starting from here and it is coming like this. EC will be another loop. EC is the another loop. Now L4, loop 4. Which is loop 4? FG. FG is another loop. And L5. Which one is that? Is there any L5? There is L5. We start from here, right? Go like here and then here. So this is again a loop. So what we can say, the loop H, G, C, right? HGC is another loop. So I guess there are five loops, right? Five loops will be there. All right. So now what we have to do? We have to find out del 1, del 2, del 3. Although there are five loops, but we don't find del 5. We will find up to del 3 only. Del 1 for multiplying with P1, del 2 for P2, and del 3 for P3. All right. So first of all, we will calculate del first. Okay. So how do we calculate del? So to calculate del, we have the formula, that is del is equals to 1 minus L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 plus number of two non-touching loops. Now अभी यहाँ पे हमें addition किसकी करनी है? Number of two non-touching loops. So are there any non-touching loops here? Can you see any non-touching loops? Two non-touching loops. So I guess loop B and loop FG. These are the only two non-touching loops, isn't it? Or is there any other loop that are non-touching? I don't think so. So our non-touching loops are, this is B, which is completely isolated from this loop FG, isn't it? So I can take here F, G, B. Right. This is F, G, and this is B. So we don't have three non-touching loops, or we don't have four non-touching loops. So our del will be this only. राइट अभी L1 की जगह पे आपको B लिखना है, L2 की जगह पे DC, L3 की जगह पे EC, L4 और L5 की जगह पे भी आपको इसी तरीके से लिखना है. So that will be your del. Okay. Now we have P1, P2, P3, and we have del also. Now what is the thing we need to find out? We need to find out del 1, del 2, and del 3. So how do we find out del 1? Del 1 इस तरीके से find out करते हैं हम कि del 1. Now see, observe which loop is not touching del 1. Is there any loop which is not touching L1? सॉरी P1 को टच नहीं कर रहा हो, ऐसा कोई लूप है हमारे पास? नो, वी डोंट हैव एनी लूप विच इज नॉट टचिंग टू पाथ P1. ठीक है. तो
व्हाट विल बी del 1 गाइस? व्हाट विल बी del 1? अगर ऐसा ऐसा कोई लूप है ही नहीं हमारे पास जो कि P1 को टच नहीं कर रहा हो, नॉन टचिंग लूप फॉर P1, so what will be del 1? Del 1 will be obviously 1. Okay, बाकी all other values will be 0, isn't it? जो हम बाद में लिखते हैं ना वो सारे वैल्यू 0 हो जाएगी, जो पहला L है, सॉरी पहला 1 है वही हमें यहाँ पे रहेगा, राइट? सो del 1, सॉरी, तो del 1 will be equal to 1. What will be del 2 guys? What will be del 2 and del 3? Can you observe? ऐसा कोई लूप है जो सेकंड पाथ को टच नहीं कर रहा है? Is there any loop which is not touching the second path, that is A, E, F, I? I guess all the loops are touching the path A, E, F, I. All right. So in such cases, what will be the value of del 2? It will be again 1, right? And what will be the value of del 3? Is there any loop which is not touching to the path third? Del 3 will be again is equals to 1. Yes or no? Right now? So del 1 is equals to del 2 is equals to del 3 is equals to 1 ही है हमारा, यहाँ पे भी 1 आएगा, del 3 भी हमारा 1 ही आएगा. तो अभी फॉर्मूला हमें करना क्या है? What we have to do to find out the transfer function? We have to simply P1 multiplied by del 1 plus P2 multiplied by del 2 plus P3 multiplied by del 3 divided by क्या लिखना है? del लिखना है. Now P1 की वैल्यू ऑफ पाथ 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 का जो गेन है ना, क्या है पाथ का गेन? P1 का है ADFI, P2 का है AEFI और P3 का है AHI. तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे P1, P2, P3 की जगह पे लिखोगे. del 1, del 2, del 3 तो 1 ही है एंड del की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे निकाली है. तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो आई होप कि अभी आपको मोर क्लियरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से हम मेसन्स गेन फॉर्मूला से एग्जांपल सॉल्व करते हो. अभी भी किसी को डाउट है कि हम del 1 कैसे निकालते हैं, P1 सॉरी P1 तो इजी ही है, del 1 कैसे निकालते हैं, del कैसे निकालते हैं? एनी स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट? बिकॉज फाइंडिंग del इज द प्रॉब्लम, नथिंग एल्स. हम फॉरवर्ड पाथ भी निकाल लेते हैं, लूप्स भी निकाल लेते हैं, लेकिन del और del 1, del 2, del 3 में थोड़ी सी गलती हो जाती है. So any doubt? How do we find out these things? Please be responsive so that we can move quickly. No doubt. Okay, Akhil, thanks. Okay, fine. So I take it as your answer as no. आपको कोई डाउट नहीं है. Okay, fine. ठीक. चलो. So I'll give you one example, guys. You can just find out uh, del 1, del 2, del 3, or whatever the things are required. Okay. So I will simply give you one signal flow graph. So this is my input node. This is a second node, this is a third node, and this is my fourth node. Okay, so we have one loop here, we have one loop here, and we have output node here. This is input node, this is output node C, and the path gains are A, B, this is D, and this is C. Okay, so first step, guys, which should be the first step? We have to find out forward paths. So how many forward paths are there? How many forward paths are there and what is their gain? A tricky question. A tricky kind of a question is this, right? How many forward paths are there? Two forward paths. How come? How come Srishti? How come Akhil? See, forward path means a single node cannot be repeated more than once. We cannot touch a node twice while going from input to output. तो अगर आप सोच रहे हो कि सर दिस विल बी अ पाथ, फर्स्ट पाथ, दैट इज हम आर से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से डी, सी, बाद में बी, ए और बाद में सी, ऐसा नहीं चलेगा. इस नोड को आप दो बार क्रॉस कर रहे हो, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. यू कैन नॉट क्रॉस वन नोड मोर देन वंस. सो हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स आर देयर? ओनली वन फॉरवर्ड पाथ इज देयर, डायरेक्टली फ्रॉम आर टू सी. ऑल राइट, या फिर कंफ्यूजन है? डायरेक्टली फ्रॉम आर टू सी.
नाउ व्हाट विल बी द गेन ऑफ दिस पाथ? हाउ डू वी राइट दिस? अभी यहाँ पे तो ना हमें ए लिखा है ना बी लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, सो हाउ डू वी राइट इट? P1 इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे क्या? व्हाट विल वी राइट? We will write P1 is equals to 1. There is no gain, that means there is a gain of 1. अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या पकड़ के चलना है हमें? उस पाथ का गेन क्या है? 1 है. So simply P1 will be equal to 1 here. Now L1 और L2 की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो. What is L1? L1 is AD, L2 is BC, right? These two loops are there. Okay. Now, what is the next step we have to find out, guys? We have to find out value of del and del 1 only. अभी यहाँ पे हमें del 2 निकालने की जरूरत नहीं है, बराबर ना? तो अभी हम del कैसे निकालेंगे? del निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? del is equals to 1 minus summation of individual loops, that is AD plus BC प्लस अभी हमें summation of टू नॉन टचिंग लूप्स लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल दो ही लूप्स है एंड दे आर टचिंग ईच अदर, सो दैट मीन्स दिस इज आवर डेल. दैट्स इट, वी डोंट हैव टू राइट फर्दर एनीथिंग, राइट? तो डेल हमारा ये आया. डेल वन अभी हमें निकालना है क्योंकि हमारे पास एक ही पाथ है ना, तो हम एक ही निकालेंगे डेल वन. सो डेल वन क्या आएगा गाइज? 1 माइनस, नो यहाँ पे बी सी जो है, बी सी जो हमारा लूप है विच इज नॉट टचिंग टू द पाथ P1, ठीक है ना? BC पाथ P1 को टच नहीं कर रहा है, सो इट विल बी del 1 विल बी 1 माइनस BC. ठीक है. नाउ if we want to find out the transfer function, how do we find out that? Transfer function will be simply P1 into del 1 divided by del, which is P1 is 1, del 1 is 1 minus BC, and del is 1 minus AD माइनस BC. ठीक है. अभी यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये जो माइनस है ये पूरे ब्रैकेट पे अप्लाई हुआ, तो इसकी वजह से दोनों जगह पे माइनस आ जाएगा. सो दिस इज आवर ट्रांसफर फंक्शन. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर अगेन, नो डाउट्स इन दिस, राइट? So whatever we have seen from the first lecture, like we have seen block diagram reduction. After that, how do we convert block diagram into a signal flow graph? And after signal flow graph, we have seen Mason's gain formula. Okay, but in control system, we have to deal a lot with transfer functions. Okay, so we'll see in detail what exactly is a transfer function. Okay, so let's go ahead. So our next topic will be transfer function. What is means by transfer function? Transfer function is nothing but ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input. मतलब कि अगर हमें transfer function लिखना है, so we simply write it like this: TF will be equal to CS, which is Laplace transform of output, and R of S, which is a Laplace transform of input. तो आपने देखा होगा कि अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन को एक प्रॉपर फॉर्म में डिफाइन करना है, सो k इज द गेन, s माइनस s1, s माइनस s2, एंड सो ऑन अप टू s माइनस sn. ये हमारा न्यूमरेटर है, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव s माइनस sa, s माइनस sb अप टू s माइनस sm. ओके, तो यहाँ पे जो ये s1 है, s2 है, या फिर अप टू sn है, ये क्या है? These are zeros of transfer function, right? And SA, SB, and so on up to SM are poles of transfer function. ठीक है, यहां तक तो आपको मालूम है. नाउ ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, TF इज इक्वल्स टू K इंटू S माइनस S1, S माइनस S2, सो ऑन अप टू S माइनस SN.
So this representation is called as frequency constant form. What? Frequency constant form. So what exactly is s? S क्या होता है गाइस? अभी मुझे कोई बताएगा कि what exactly is s? एस की कुछ वैल्यू होगी ना कि हम ये एस क्यों लेते हैं जब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं. सो व्हाई डू वी टेक एस? बेसिकली एस इज related to the stability and the frequency component of that system. ठीक है, तो s का जो अगर हम वैल्यू की बात करें तो s इज इक्वल्स टू, आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि s इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा प्लस j ओमेगा. राइट. व्हाट इज ओमेगा हियर? ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी. ओके. सो अभी हम यहाँ पे s के फॉर्म में ही सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरोस भी, पोल्स भी. सो दिस विल बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म. अभी कभी कभी या फिर जब हम बॉडी प्लॉट की बात करते हैं, बॉडी प्लॉट में हमें टाइम कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है. ओके. सो वी हैव टू सिंपली चेंज दिस फंक्शन इनटू टाइम कांस्टेंट फॉर्म. इट्स इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट फॉर्म. तो उसे हम किस तरीके से करते हैं, देखो. We will be taking common certain things. So this was guys frequency constant form. Okay. And now जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ या फिर लिखने वाला हूँ, that is time constant form. ठीक है. So time constant form जो है ट्रांसफर फंक्शन का, टी एफ इज इक्वल्स टू रहेगा के एज इट इज रहेगा 1 प्लस टी वन एस इंटू 1 प्लस टी टू एस एंड so on up to 1 plus TNS divided by 1 by 1 plus TAS, 1 plus TBS and so on up to 1 plus TMS. तो अभी यहाँ पे ये जो T1 है, T2 है, T3 है, so on up to यहाँ पे TA, TB, ये सब भी क्या है? These are टाइम कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. जब हम बॉडी प्लॉट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो तभी हमें टाइम कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म के ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म के ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ वी कैन डू दिस. ऑलराइट. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ पोल जीरो प्लॉट. Let us suppose this is our y-axis or the imaginary axis we can say, and this is our real axis. Okay. Now if I draw poles and zeros here, so this is my pole, this is 0 and this is again a pole. This is -2, this is -3 and this is -4. So you might be knowing poles are represented by this mark and zeros are represented by this mark. Okay. So what will be the transfer function, guys? Transfer function is nothing but zeros minus, sorry, zeros divided by the, what we can say, poles. All right. So अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा इस पर्टिकुलर डायग्राम का, तो k जो है वो गेन रहेगा. k तो हमें हमेशा लिखना ही है. सो व्हाट आर द जीरोस हियर? जीरोस यानी कि जो न्यूमरेटर में है, देयर इज ओनली वन जीरो, दैट इज -3. तो मैं यहाँ पे जीरो लिखूंगा s+3. ठीक है. -3 है तो s+3 लिखना होता है. एंड in the denominator we will be having s+2 and s+4 as their poles. ठीक है. तो इस तरीके से हम ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. Okay, there will be certain tricks in which we can find out the value of k also. Okay, so we are not interested in finding the value of k as of now. We'll find that in the future. So what we are interested in, now this is a frequency constant form, guys, right?
s plus 3, s plus 2, s plus 4. So 3 minus 3 is the pole, sorry, minus 3 is the 0, minus 2 and minus 4 are the poles, right? Now I have to represent it in the टाइम कांस्टेंट फॉर्म. सो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो पहला जो आपका डिजिट है ना, दैट इज ऑलवेज वन. वन प्लस टी वन एस, वन प्लस टी टू एस, वन प्लस टी एन एस. मतलब पहला डिजिट जो है वो हमारा वन है. और जो दूसरा, या फिर हम दूसरा डिजिट कहने के अलावा मैं कहूंगा दूसरी जो टर्म है, उसमें एस इज कंपलसरी, एस कंपलसरी है, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, सभी जगह पे एस है दूसरी टर्म में. सो इसी तरीके से हमें इसमें से ऐसी कुछ चीजें कॉमन निकालनी पड़ेगी, जिससे कि पहली प्लेस पे वन आ जाए, दूसरी प्लेस पे एस आ जाए. ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ, के में से, या इस पर्टिकुलर टर्म में से मैं थ्री कॉमन निकालता हूँ. सो के इंटू थ्री, वन प्लस वन बाय थ्री एस. ठीक है, एस में से भी थ्री कॉमन निकलेगा तो वन बाय थ्री आएगा, राइट? नाउ डिवाइडेड बाय एस प्लस टू में से टू कॉमन निकलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन प्लस वन बाय टू एस. और जो दूसरा ब्रैकेट है उस पे मैं क्या लिखूंगा, फोर कॉमन निकालूंगा. सो फोर एंड वन प्लस वन बाय फोर एस. ठीक है, सो टू मल्टीप्लाइड बाय फोर इज एट. सो इट विल बी फाइनली थ्री के बाय एट इनटू दिस होल टर्म. ठीक है, ये जो है ना कंप्लीट. तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट्स क्या आएगा, इस टाइम कांस्टेंट्स टी वन विल बी वन बाय थ्री, टी ए विल बी 1 by 2, and TB will be 1 by 4. So these are the time constants. Okay, I hope you understand this, right? So इस तरीके से हम इसे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. Now one more thing about transfer function is that transfer function can be defined for only LTI system, that is टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, राइट? टाइम वेरिएंट सिस्टम जो रहेगी उसका हम ट्रांसफर फंक्शन, या फिर नॉन लीनियर जो सिस्टम रहेगी उसका भी हम ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ओके, सो ये सब चीज़ें क्या है, जब हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे कंट्रोल सिस्टम के या फिर सिग्नल सिस्टम के, तब हमें समझ में आएगा. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम ट्रांसफर फंक्शन में डील करेंगे ना, लाइक आर एच क्राइटेरिया है, राउथ हर्विट्स, या फिर नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट, बोडे प्लॉट एंड रूट लोकस, तो इसमें हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है सिस्टम की. सो वी फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम विच इज क्लोज लूप सिस्टम. मतलब क्लोज लूप सिस्टम है जिसके कि हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, बट वी हैव टू यूज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम. नाउ दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम की हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम. नाउ हाउ डू वी डिफरेंशिएट दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन? वी कैन नॉट डिफरेंशिएट गाइस. ओके, जब हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या क्या है और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है. But if only transfer function is given, then we cannot determine whether it is a open loop or closed loop. Okay, numerator और denominator तो दोनों में भी रहता है. But we can convert these transfer functions. Like अभी हमें example में दिया रहेगा कि this is a closed loop transfer function and you can proceed with your procedure. So closed loop transfer function दिया है, so that is none of our use because we want to find out stability of the transfer function or the system, but we need a open loop transfer function which is not given. So sometimes we have to convert closed loop transfer function into its equivalent open loop transfer function, or it may be vice versa also. Like open loop transfer function might be given and you have to convert it into um, open loop is given and you have to convert it into closed loop transfer function. Okay, so there are simple shortcut methods or tricks that you can remember. How do we convert short open loop transfer function and closed loop transfer function among them? Okay, so first thing, let us suppose we have given OLTF, that is open loop transfer function. Okay, OLTF is open loop transfer function. Open loop transfer function को हमें convert करना है closed loop transfer function में. Okay, so मान लीजिए कि ये जो OLTF यहाँ पे है, इसका कुछ तो न्यूमरेटर रहेगा और इसका कुछ तो डिनोमिनेटर रहेगा. ऑलराइट, सो इसका इक्विवेलेंट अगर हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहेंगे ना गाइस, तो हमें किस तरह से निकालना है? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर. ओके, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, क्लोज लूप निकालने के लिए बोला है. सो
जो न्यूमरेटर रहेगा वो न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे हम, डिनोमिनेटर में हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखेंगे, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट closed loop transfer function of that system. All right. Now, second thing, if let us suppose we have given closed loop transfer function and they are asking us to find out, let us suppose we have given closed loop transfer function and they are asking us to find out open loop transfer function. So again, for the closed loop transfer function, we will be having a numerator and a denominator. Sorry for the bad handwriting. Okay, numerator divided by denominator. So this is our given CLTF, closed loop transfer function. If we need to find out OLTF, that is open loop transfer function, तो न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करना है. Okay, so these are the two tricks. So you can convert the transfer functions among them. ठीक है. अभी एग्जैक्टली मतलब प्रैक्टिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो डिफरेंस इज वेरी सिंपल. लाइक लेट अस सपोज वी हैव गिवन वन सिस्टम एंड इफ वी लाइक रिमूव द फीडबैक, फीडबैक हम नहीं है ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, एंड एट दैट टाइम जो ट्रांसफर फंक्शन रहेगा या फिर जो फॉरवर्ड पाथ का गेन रहेगा, दैट विल बी द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. बट व्हेन वी इंक्लूड द फीडबैक पाथ, then that becomes closed loop transfer function. All right, so this is how we differentiate between open loop and closed loop transfer function. Now the one more question that might be asked is to find out the डीसी गेन. तो गेट एग्जाम में कभी कभी डीसी गेन का क्वेश्चन भी आ सकता है गाइस. ओके, सो डीसी गेन यानी क्या होता है? सो जस्ट वन थिंग आई वांट टू आस्क, लाइक लेट अस सपोज डीसी गेन हमें निकालने के लिए बोला है, दैट मींस व्हाट, कि जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू जीरो. राइट, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है हमारे इस ट्रांसफर फंक्शन में? ट्रांसफर फंक्शन में हमारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है एस. ठीक है, तो एस की अगर हम वैल्यू जीरो रखते हैं, सो इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट द डीसी गेन ऑफ एनी सिस्टम, isn't it? Let us take one example so that you will understand. Now I'm giving you one example in which, let me just put the heading here, that will be quite easy for us. Just a sec. Easy again. Now the question is, open loop DC gain of a unity feedback system with CLTF. CLTF is given, I have to draw it. Okay, so CLTF क्या दिया है हमें? CLTF दिया है s plus 4 divided by s square plus 7s plus 13. तो इसका हमें क्या निकालना है? ओपन लूप डीसी गेन निकालना है गाइस. ओपन लूप डीसी गेन यानी कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल्स टू 0. राइट, सो हाउ डू वी फाइंड आउट? अभी यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स है. दो मेथड्स कैसे? कि हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है क्या होता है. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज, closed loop transfer function CLTF is always g of s, right, divided by 1 plus g of s into h of s. राइट, तो यहाँ पे h ऑफ s क्या है? h ऑफ s 1 है क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम बोला है ना, तो यूनिटी यानी कि फीडबैक जो है वो h ऑफ s इज इक्वल्स टू 1 रहेगा. सो बेसिकली वी कैन कंपेयर दिस विथ लाइक दिस 1 प्लस g ऑफ s. राइट, तो यहाँ पे हमें g ऑफ s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम? लाइक see, this is equal to g of s divided by 1 plus g of s divided by g of s will be equal to s plus 4 divided by s square plus 7s plus 13. ठीक है, तो मैंने आई थिंक मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है यहाँ पे. राइट, जी ऑफ एस को मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिखा. जी ऑफ एस को मैंने जी ऑफ एस से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिखा. ओके, और सॉरी, वी कैन नॉट स्प्लिट लाइक दिस.
Okay, we cannot split like this. We have to wait just a second, guys. इस तरीके से split नहीं हो सकता ना. Yeah, I know. Hmm. So can I write like this? G of s divided by 1 plus g of s is equals to s plus 4 divided by s square plus 7s plus 13. राइट, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. अभी मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ. हाउ डू आई रिवर्स? लाइक, सी, इफ आई राइट लाइक दिस, 1 plus g of s divided by g of s will be equal to s square plus 7s plus 13 divided by s plus 4. So I guess it will not be wrong. राइट, यहाँ पे अभी मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ, आई गेस. तो यहाँ पे हम वो कर सकते हैं जो मैं कर रहा था ना वहाँ पे. ओके, I should repeat the last step. Yeah, all right, I'll repeat it. I'll repeat it from beginning. Okay, so CLTF हमें पता होता है g of s upon 1 plus g of s into h of s होता है. So h of s is 1 here because we have given that is unity feedback system. Yeah. Now h of s हमारा 1 बन गया. Now g of s divided by 1 plus g of s will be our CLTF. अभी CLTF की वैल्यू हमारी ये है और ये है, तो मैंने इस दोनों को इक्वेट कर दिया. अभी इनको मैंने इनवर्स कर दिया. 1 प्लस जी ऑफ एस अपॉन जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13 डिवाइड बाय एस प्लस 4 लिखा. ऑलराइट, नाउ इट कैन बी अगेन रिटर्न एज, what happens this, I don't know, 1 by g of s will be equal to s square plus 7s plus 13 डिवाइडेड बाय s प्लस 4 माइनस 1. ठीक है, ये जो माइन यहाँ पे 1 था ना प्लस, तो यहाँ पे जाके माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है. नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस? वी कैन सॉल्व दिस लाइक 1 बाय g of s is equals to s square plus 7s plus 13 minus s minus 4 divided by s plus 4. आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस. मैंने s प्लस 4 से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, 1 को, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा. सो 1 बाई जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा गाइस? इट इज एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9 डिवाइडेड बाय s प्लस 4. अभी अगर मैं यहाँ पे s की वैल्यू जीरो रख दूं, राइट, s की वैल्यू अगर मैं जीरो रख दूं, पुट s इज इक्वल्स टू जीरो टू फाइंड आउट dc गेन, राइट. Put s is equals to 0. So 1 by g of s will be equal to 9 by 4 and g of s will be equal to 4 by 9. ऑल राइट, तो हमारा डीसी गेन यहाँ पे क्या आया? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का या फिर ओपन लूप सिस्टम का डीसी गेन आया 4/9. नाउ दिस वाज द कन्वेंशनल मेथड. कन्वेंशनल मेथड में थोड़ा सा टाइम भी लगा और देयर इज अ पॉसिबिलिटी लाइक वी कैन मेक द मिस्टेक आल्सो. तो मैंने जो आपको बोला था ना कि हम ट्रांसफर फंक्शन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन CLTF हमें ये दिया है. ऑलराइट, सो CLTF टू OLTF हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? CLTF टू OLTF हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस माइनस सॉरी, CLTF टू OLTF हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. ओके, सो यहाँ पे CLTF जो दिया है मैं वहां इसे फिर से लिख देता हूँ. CLTF हमें दिया था s plus 4 divided by s square plus 7s plus 13. This is, let us suppose, numerator and this is denominator. So what we have to do? We have to put numerator as it is, that is s plus 4, and we will be having denominator as s square plus 7s plus 13 minus now numerator, that is s minus 4, right? So s plus 4 divided by s square plus 6x plus 9. So by putting value of s is equals to 0, it will be 9, 4/9 also, right? So this is a quite simple method, isn't it? Now any doubt in this, like how do we convert, what do we do? All right, no doubt, fine, thank you. So guys, I will give you one OLTF now.
आई विल गिव यू वन OLTF, यू हैव टू फाइंड आउट द गेन ऑफ CLTF। मतलब मैं आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रहा हूँ, आपको क्लोज लूप उसका क्लोज लूप गेन निकालना है। ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन हियर। यू हैव ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज, हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लाइक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखा जाता है g of s into h of s, मोस्टली लाइक दिस, राइट। सो इसकी वैल्यू है s plus 1 divided by 5s square plus 6s plus 2। नाउ इसका ओपन लूप डीसी गेन भी निकालो, क्लोज लूप डीसी गेन भी निकालो, और मुझे बताओ क्या रहेगी वैल्यू ओपन लूप डीसी गेन, क्लोज लूप डीसी गेन। Guys, you can solve. Okay, open loop DC gain, closed loop DC gain। ओपन लूप DC gain में तो हमें डायरेक्टली s is equals to 0 रखना है। So what will be open loop DC gain? Will it be 1 by 2? Yeah, all right. It is 1 by 2. Now closed loop DC gain. Okay, closed loop DC gain is 1 by 3। Clear for everyone? ठीक है, गॉट एवरीवन? सबको सबका आंसर आया 1 by 3 और 1 by 2? Only for unity feedback? No, it is not necessary. It, see, it is like when you find out DC gain, no, it doesn't matter whether it is a unity gain feedback or anything else. You just have to put the value of s is equals to 0. That's it. Okay, it doesn't matter. But when you define the type and order of system, then it is important whether the system is unity feedback or not। ओके, तो ये यूनिटी के लिए नहीं है गाइस, ठीक है। मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं है। अगर तुम मतलब तुम्हारा डाउट है तो आई विल चेक इट वंस अगेन एंड आई विल कंफर्म इन द नेक्स्ट क्लास, ऑलराइट। लेकिन जहां तक मुझे पता है तो ये इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सिस्टम्स। नाउ like one more thing, one more topic that we are going to cover today, and we'll stop for today. So let us suppose we have one, sorry, we have a system that is, it has a forward path gain g, this is output c, this is input r, and we have, okay, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट भी मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। We have a feedback h here, all right। So guys, can you please tell me like अभी जो इसका overall gain है, I'm talking about overall gain, इस फीडबैक पाथ का और इस जो फॉरवर्ड पाथ का गेन है, इसका इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मान लीजिए कि जो हमारा जी है वो जी इंक्रीज हो रहा है, तो गेन क्या होगा? ओवरऑल गेन जो है वो क्या होगा? अगर जी इंक्रीज हो रहा है, जी की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ओवरऑल गेन क्या होगा? एनी आइडिया? किसी को कोई है आइडिया कि क्या होगा सर, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? मान लीजिए कि जी की जो हमारी वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है बाय सर्टेन परसेंटेजेस। ओके, इट विल इंक्रीज। सृष्टि says it can increase. How about others? किसी को कोई आइडिया? ओके, फाइन, नो इश्यूज। सो ऑब्वियसली इट इज गोना इंक्रीज, ठीक है। जी अगर इंक्रीज हो रहा है तो गेन भी क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। नो एच अगर इंक्रीज हो रहा है तो गेन क्या होना चाहिए? गेन शुड डिक्रीज, ओवरऑल गेन शुड डिक्रीज। ओके, सो कैन यू प्लीज टेल मी कि अभी अगर एच अगर हम एच बढ़ाते हैं तो गेन तो डिक्रीज होता है, then why don't we use open loop transfer function or open loop systems only, and why we use closed loop systems, why we use feedback path?
Can anybody tell? Guys, please be comfortable turning on your mic also, because we are only five guys here, right? So you can turn on your mic and tell. Why do we use feedback paths or feedback elements? If you're not comfortable turning on your mic, you can type it in the chat box. अगर फॉरवर्ड पाथ गेन इंक्रीज हो, मतलब अगर फॉरवर्ड पाथ का हमारा ट्रांसफर फंक्शन हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ओवरऑल गेन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम फीडबैक एलिमेंट लगाते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, तो गेन डिक्रीज होता है. Then also we use feedbacks. Why is it so? Because the reason is, even though the gain decreases, stability of the system increases. Yeah, to make system more stable. ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है सिस्टम की, इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ फीडबैक. ठीक है ना, मैंने कह दिया आपको कि अगर आप गेन बढ़ाओगे तो, सॉरी, फॉरवर्ड पाथ का जो ट्रांसफर फंक्शन जी है उसे बढ़ाओगे तो आपका ओवरऑल गेन भी बढ़ जाएगा. Okay, so how do we verify this? We'll verify this. Okay, so the last example, guys, and then we can stop. So let us suppose I have a system in which here is the summing point, here is a gain, which is, let us suppose, g is equals to g1 is equals to 10. This is output c, this is r, and this is, let us suppose, a यूनिटी फीडबैक. कुछ भी नहीं है, मतलब एक यूनिटी फीडबैक है. ओके, तो मान लीजिए कि इसका जो फॉरवर्ड गेन है, g1 increases by 10%. Okay, g1 increases by 10%. Then what will be the effect? What will be effect on c by r? Whether it will increase or whether it will decrease, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारा गेन इंक्रीज नहीं हुआ है, in that case, what will be the transfer function, guys? c by r will be what will be the value of c by r? c by r हम कैसे निकालते हैं? g1 upon 1 plus g1 h1, राइट? तो g1 हमारा 10 है, 1 प्लस g1 10 है, h1 1 है, राइट? देखिए यहाँ पे माइनस है, ये जो मैंने फीडबैक दिया है ना, यूनिटी फीडबैक, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस रहेगा तो हम पॉजिटिव लेते हैं, राइट? सो इट विल बी c by r will be equal to 10 by 11, right? This is our original gain. Now अभी अगर हम 10% से बढ़ाते हैं, नाउ g1 इज इंक्रीज बाय 10%, तो कितना बना g1? अभी न्यू g1 कितना बना? अभी भी इसको स्टार दे देता हूं, इट विल बी 11. ओके, सो c बाय r अगर मैं न्यू वाला निकालूंगा, सो 11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11, that will be 11 by 12. Okay, so if you find out the difference between these two values, there will be a slightest difference, but it will be positive. ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ द गेन इंक्रीजेस. This is how the overall gain increases. Now if you take h, if you take some value of h and you increase that, then in that case the overall gain will decrease. ठीक है, so I think that's it for today, and in the next class, on the next Sunday, what we will be learning order and types of system, and how the first order or type 1 system reacts to the impulse signal, step signal, and what are the like responses of the system under damp system, after that sustained oscillations, over damp, and critical damp. So we'll be learning all those things. Okay, so I guess किसी को आज के हमारा जो टॉपिक्स थे 2-3, उसमें कोई डाउट नहीं है. Okay, all right guys, so shall we say bye bye? Is it okay? Fine. Any doubts? अगर कोई doubts नहीं है, so I'll be closing it from my side. All right, no doubts? Just confirm once and then we can say bye bye. No doubts. All right, thank you, thank you. ठीक, ऑल राइट. ठीक है, फिर अगर नहीं है डाउट, सो यू कैन ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द कॉल. ऑल राइट, बाय बाय. We'll see you in the next. And one more thing. Okay, I forgot to tell that on the next Wednesday we won't be having the aptitude class. Okay, Aditya, you only heard this. That is fine. I'll post it on the group also.